जय जगन्नाथ सांग मैंने क्वेश्चन नंबर 91 आम आरंभ करवा इंडियन पॉलिटी। क्वेश्चन हूँ व्हाई इज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफन डिबेटेड एज ए बैग ऑफ बोरोइंग। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत टाइम रे कौन पाई एटा डिबेट करा जाए जे एटा गोटे बैग ऑफ बोरोइंग। आंसर हूँ ऑप्शन बी बिकॉज इट्स मेकर्स टूक डिफरेंट एस्पेक्ट्स फ्रॉम वेरियस कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन एंड अडॉप्टेड देम टू इंडिया नीड। माने बहुत जगह डिफरेंट सोर्स आम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने आसिकी पुणी इनकॉर्पोरेट होइथिबारु सेटा को कहा जाए बैग ऑफ बोरोइंग। तो यहाँ एक्चुअली आम इंडिया एटा गोटे टर्मिनोलॉजी नुह प्राय वेस्टर्न थिंकर आउ के जन इंडियन थिंकर माने एटा को कहते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हिच डॉक्यूमेंट इज फेमसली रिफर एट द ब्लूप्रिंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आंसर होची द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को ब्लूप्रिंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोली कहा जाए कहीं ना मैक्सिमम प्रोविजन सेठो इनकॉर्पोरेट होता इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे। 93 नंबर क्वेश्चन कहूँ अप्रोक्सिमेटली हाउ मच ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। आंसर होची 2/3 नियरली 66%। नियरली 66-67% भाया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने मिसी। नेक्स्ट हूँ 94 नंबर द कॉन्सेप्ट ऑफ फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर। माने कॉन्सेप्ट ऑफ फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर वाज बोरोड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम व्हिच कंट्री। आंसर होची एटा होची कनाडा। कौन पाई ये आसला ना इंडिया डाइवर्सिटी को देखिकी जेहेतु इंडिया गोटे बहुत डाइवर्स कंट्री सिमिलरली कनाडा भी गोटे डाइवर्सिटी माने डाइवर्सिटी रे कंट्री तो से कॉन्सेप्ट ऑफ फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर आसला। नेक्स्ट कहूँ 95 नंबर फ्रॉम व्हिच कंट्री डिड इंडिया अडॉप्ट आर्टिकल 301 व्हिच guarantees the freedom of interstate trade commerce and intercourse। आंसर होची ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा 96 which of the following feature in the Indian Constitution is entirely original and unique to India। आंसर टा कौन हम ना abolition of untouchability and पंचायत राज सिस्टम। पंचायत राज सिस्टम आ abolition of untouchability एटा टोटल हम ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन रे अछि एटा काठ भी हमें बरो करिकि बा आनिने। नेक्स्ट 97 नंबर क्वेश्चन द एस्टाब्लिशमेंट ऑफ द ऑफिस ऑफ द गवर्नर एज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ ए प्रोविंस और स्टेट इज सोर्स फ्रॉम द ऑफिस ऑफ द गवर्नर टा कोठु आसीची। आंसर होज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। नेक्स्ट 98 नंबर क्वेश्चन इन व्हिच ईयर वाज द फेडरल कोर्ट एस्टाब्लिश्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। को ईयर रे हमर फेडरल कोर्ट टा एस्टाब्लिश्ड हेतिला का अंडर रे ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। आंसर होची 1937। कोठे तयारी हेतिला एटा होतरी आंसर होची कलकत्ता हेतळे काल CLCOTTA कलकत्ता। आ गोटे इंपोर्टेंट कथा मन रखिबो जे ये जो कोलकाता रे हेतिला फेडरल कोर्ट तार फर्स्ट चीफ जस्टिस किए थिले एलिजा इम्फे। एलिजा इम्फे थे तार फर्स्ट चीफ जस्टिस। नेक्स्ट द फ्रेमवर्क फॉर द पब्लिक सर्विस कमिशन जोटा टुडेज UPSC एंड PCS माने जो स्टेट PCS गुड़ाक वाज अडॉप्टेड फ्रॉम व्हाट एटा आंसर होची गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रो आना हैतिला। 100 नंबर क्वेश्चन द थ्री फोल्ड डिवीजन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर फेडरल प्रोविंशियल एंड कंकरेंट लिस्ट ओरिजिनेट्स फ्रॉम व्हिच ऑफ द शेड्यूल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। एटा को शेड्यूल हमको देखिया मिलुची। आंसर होची शेड्यूल 7। शेड्यूल 7 ने हमर तीनटा लिस्ट अछि जोटा कि होची हमर यूनियन लिस्ट आ गोटे स्टेट लिस्ट आ गोटे होची कंकरेंट लिस्ट। नेक्स्ट 101 under the government of India Act 1935 the emergency provision gave discretionary power to take over administration during a constitutional breakdown to तो हाँ एटा इंपोर्टेंट एटा समस्त कंफ्यूज है कि प्रेसिडेंट मार दियंती किंतु गवर्नमेंट ऑफ हाँ प्रेसिडेंट आंसर हम कहीं प्रेसिडेंट पाखे इमरजेंसी लागू करियार बहुत अधिक पावर थाए किंतु गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रे का विषय मेंशन होची। आंसर होची गवर्नर। नेक्स्ट the concept of single citizenship and the rule of law आ single citizenship कोठु आस्तिला। आंसर होची यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट क्वेश्चन 103 नंबर कहला द प्रीरोगेटिव रिट्स एंड द कैबिनेट सिस्टम इन द इंडियन पार्लियामेंट स्ट्रक्चर आर फीचर अडॉप्टेड फ्रॉम व्हिच कॉन्स्टिट्यूशन माने कोठु आस्तिला एटा भी आंसर होची यूनाइटेड किंगडम बा यूके। नेक्स्ट कहला Which country constitution inspired the inclusion of fundamental right judicial review और preamble एटा आंसर होची USA। आंसर USA। नेक्स्ट the complex process of the impeachment of the president removal of the supreme court और high court judges are adapted from कोठु ना USA रो एटा भी USA रो।
नेक्स्ट 106 नंबर क्वेश्चन कहला द डीपीएसपी बा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड द मेथड ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन वाज बोरोड फ्रॉम आंसर होची आयरलैंड रो एटा आस्तिला 107 नंबर क्वेश्चन कहला द सिस्टम ऑफ नॉमिनेटिंग मेंबर्स टू द राज्य सभा और अपर हाउस वाज अडॉप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ राज्य सभा आस्तिला से आयरलैंड रो मन रखो इंपोर्टेंट vesting the residuary power with the center and the advisory jurisdiction of the Supreme Court. ये दीटा जो residuary power और advisory jurisdiction of the Supreme Court are feature borrowed from एटा आंसर होची कनाडा रो Canadian Constitution रो 109 number the concept of concurrent list and the provision for a joint sitting of the two houses of parliament were taken from concurrent list और joint sitting of two houses of the parliament दीटा का हमारा कोठ आस्तिला ना ऑस्ट्रेलिया रो आंसर होची ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन 110 number the fundamental duty or FDs and the idea of social, economical and political in the preamble were borrowed from answer hoji USSR. Next, the idea of liberty, equality and fraternity along with the concept of republicanism or republic in the preamble were taken from कोडू आस्तिला liberty, equality, fraternity आसियो माने डायरेक्ट फ्रेंच काहेकि ना liberty, equality, fraternity तीनटा फ्रेंच रिवोल्यूशन नो गिफ्ट बोली कहा जाए 112 नंबर क्वेश्चन कौन कहला द प्रोविजन फॉर द सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी एटा कोठु आस्तिला आंसर होची जर्मनी रो आस्तिला कोन ना तो प्रोविजन फॉर द सस्पेंशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी नेक्स्ट देखिबा द प्रोसीजर फॉर अमेंडिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमरा प्रोसीजर फॉर अमेंडिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कोठु आछि आंसर होची साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन देन द इलेक्शन प्रोसेस फॉर मेंबर्स ऑफ राज्यसभा रो सदस्य मानक इलेक्शन प्रोसेसटा कोठु आछि सेटा भी साउथ अफ्रीका किंतु नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा एटा कोठु आछि एटा आसिले आयरलैंड रो आछि देन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ कोठु आछि जापान जदि से पचारथांदा ड्यू प्रोसेस ऑफ द लॉ सेटा कोठु आस्तांदा सेटा हेतांदा यूएसए तो यहाँ था 25 टा इंपोर्टेंट क्वेश्चन जोटा कि पॉलिटी मु डिस्कशन कली एमती आम डिस्कशन चलो आ प्रॉमिस अनुसार मु 2000 प्लस क्वेश्चन इंडियन पॉलिटी निहाती भाव में आपण मानक देवी तो वीडियो भल लगे देन लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे थैंक यू वेरी मच जय हिंद जय भारत।